Everybody, अभी हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए मैकडॉनल्ड्स and I have no idea. People say like when vlogging always tell कहाँ जा रहे हैं, पर मेरे को भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ. So basically right now I'm going to McDonald's at Kali Ghat because I have to shoot an advertisement for a program that is like, and I have to submit that by tomorrow 8 o'clock. And I don't know how exactly it is going to happen. I've never done this before. मेरे को लग रहा था कि कोई quiz type की चीज़ होने वाली है, because of which I had said yes. But now that we have to shoot this, let us see how it goes. And I'm heading towards the metro right now. Let me see the location. Right now I am in Kali Ghat and हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड शूट करने के लिए. यहाँ से मेरे को 3 मिनट का रास्ता दिख रहा है and I'm going and then I'll think कि मेरे को क्या करना है शूट और कैसे करना है exactly, because I have very little idea as to what exactly am I doing. But let us see what happens. My teammate said कि वो जो है फोरम मॉल में मिलेगा for Burger King, but I think यहाँ पे वो काम हो जाने वाला है, तो I think I can do it here only. Let's see. हम लोग आ चुके हैं लेक मॉल के अंदर and मॉल काफ़ी छोटा है ये वाला, but it has a lot of shops in बहुत ही कम area. But I'd say बर्गर किंग में शूट करने के लिए and I am at that cafe and let's see what happens. So my teammate is arriving right now and we are going to shoot after that. So hello everybody, I am नमस्कार. This is Ayush Agarwala. ये मेरी दीदी आर्या अग्रवाल. So yes, हम लोग जो है यहाँ पे शूट करने आए हैं एडवर्टाइजमेंट. So hello everybody, आज हम लोग खड़े हैं मैकडॉनल्ड्स में. We were asked to advertise for McDonald's, but we decided that we will let people speak for it. So let's go. Hi ma'am. So why did you choose McDonald's? Next customer, sorry. McDonald's या Burger King? Okay, so McDonald's or Burger King? McDonald's. McDonald's or Burger King? I prefer McDonald's. And why exactly? Guys, Gen Z से पूछ लिया, बूढ़ों से पूछ लिया, मिलेनियल से पूछ लिया, अब बारी है हमारे Gen Alpha. आज हम जनता से पूछेंगे मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग. आंसर हमें वैसे पता है, मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग. मैकडी. क्यों? उसका ब्रेड बहुत सॉफ्ट होता है और जो अंदर का. अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट पॉलिस मॉल से बाहर आफ्टर शूटिंग. तो आयुष, हम लोग क्या किए यहाँ पे?
फुल ऑन बकचोदी, कोई काम का काम नहीं। तो हम लोग बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब भी किए बहुत ज्यादा, मानना पड़ेगा। राइट, वो उसकी आदत है। तो तो अभी जो है वो हम लोग बहुत सारे लोगों से रिव्यूज लिए यहाँ पे एंड इट वाज वेरी मच फन। मोरल ऑफ द स्टोरी इज किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो पढ़ने दो। तो अभी हम लोग भागते हुए जा रहे हैं। You know what? I feel so good after editing the video. It looks so good and I feel a sense of progress after so long. Like, oh my god. I mean, that state of flow, I had lost it long back. I don't need no timer for it. It's like I am so dived in ki I haven't eaten, but I think if I had my whole day, I would do the same thing and feel the same joy. God, I love this. So hi guys, ये मैं हूँ और ये मेरा रूम है। ADHD. Let's go. I'm already late. Abhi, I'm going to Bhawanipur College and we'll see next. As always, I'm again late. So, let's go. The concept of cringe was clearly developed by people who did not have the gut to be themselves, but they wanted to feel good about themselves. And hence, we developed it and, making the social anxiety the new normal. ये हम लोग निकल रहे हैं रविंद्र सदन गेट नंबर 3 से फॉर गोइंग टू भवानीपुर। और हम लोग जो है वो काफ़ी सुभाष वाली मेट्रो पकड़े थे एंड हियर वी गो। अभी हम लोग बैठे इवेंट के बाद। नहीं गया। He's dead. हाँ, मतलब मेरे हिसाब से इट ओके, इसके हिसाब से अच्छा नहीं गया। आई थिंक I am looking like a zombie. 2 घंटे सो के कोई भी ज़ॉम्बी लगेगा। मतलब he's not looking like a zombie, he's feeling like a zombie. I am looking like a zombie as well. No, it depends. Like जब सोए नहीं रहता ना इंसान, तो you look at yourself differently. मेरा आँख में पूरा गड्ढा पड़ा दिख नहीं रहा। नहीं, it's actually psychology. That whenever you haven't slept at night, you will feel that you look ugly. You do not actually look ugly. So it's a fact. So I'm out of here and abhi I don't know what exactly did we learn today is कि I don't know, your speech should be prepared enough. हम लोग को लगा कि सिर्फ वो advertisement वाला था. So and I know like I have my instinct saying कि if you know कि people do not actually, अगर तुमको reviews के थ्रू पता है कि एक आध भी लोग तुम्हारे brand को support नहीं कर रहे हैं, so do not ask people to raise their hands. That was one point. And something that is very deep कि as if I put out a point कि preservatives are not that bad. This is a very depth वाला point which people cannot understand in 2 minutes. So हम लोग को surface level बात करनी होती है. So yeah, these are some points and yeah, get your speech ready even if it's just an ad वाला competition because you can't be saying bullshit out there. So yeah, know your brand. बाकी तो I don't know. Let's see.
is merely a noise pollution. So it's giving me headache, and I am leaving because I do not know what happened in the event. I think I should go once if it's still going on or what is happening. But I generally don't want to face it. It's like I'm so done with these things. Like I hate competition at this point because I'm like, I gotta chill. And this is not exactly chilling when you're actually competing, which is something I do not like at all. So, but still, I don't know what to do right now. Let's see. I'm seeing कि first या second floor में क्या होता है. If it's okay, it's okay. Otherwise, I don't know. Honestly, it's boring as heck. I cannot sit through the competition itself. I did not. I mean, I do not enjoy it कि हाँ भाई मेरा brand है भाग. I don't care किसका brand है. I don't know. मेरे को तो लगा था कि it is going to be some sort of a brand quiz because of which I came, and honestly I don't know, but the infrastructure of this college is like really good, which is something that I actually enjoyed. And regarding sitting here, मैं नहीं बैठ सकती यार, and if I get rejected again, I do not want to hurt myself any further. I'm not in a position to get any hurt. I know कि मेरे को बहुत समझाना पड़ेगा खुद को after that and all of that, but I don't want to sit, and you know जाने का भी मन नहीं हो रहा है and रहने का भी मन नहीं हो रहा है. I don't know where to go. So I don't know. I genuinely don't know. So अभी मैं सोच रही हूँ कि आई एम गोइंग टू ईट समथिंग बिकॉज मेरे को रोना आना शुरू होने वाला है, एंड दैट इज हाउ आई नो कि मेरे को खाना खाने जाना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू ईट समथिंग. आयुष कैसा लगा? I mean, 1/4 of them, so it definitely really feels good. अब CA इंटरमीडिएट क्लियर करना है, उसके बाद बाकी इवेंट्स जीतेंगे. ओके ग्रेट. मेरे को सबसे ज्यादा मजा जो है वो शूट करने में आया था वहाँ पे. ओवरऑल लाइक पूरे I mean, event में. सबको इरिटेट करने में भाई जो मजा आया था उस टाइम ना, Right. सबको डिस्टर्ब करने में जो मजा आया था. इट वाज सो मच फन. आई चलो मीन सीरीज बाकी तो ठीक है, जो हुआ नहीं हुआ, बट क्या आई डोंट नो. लेट्स गो. बाय बाय. देखो आयुष जो है वो ट्रीट दे रहा है. Oh, hello. Hi. Dee has helped me a lot in the editing of the video. Actually, she has edited the video, so she deserves a treat from my end. Whatever she wants to eat today. ये जितने बार मेरे को कुछ भी बोला एडिट करने के लिए, I was like, क्या आदमी है, मेरा दिमाग खराब. And that is why we won. I told her to edit. She did that, and we won. या मैं मतलब लिटरली लाइक क्या आदमी है. उसके बाद आई लाइक बात तो गलत नहीं बोल रहा है, एंड फिर ईगो हर्ट हो जाता है. Ultimately, this is the result. नीचे 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 नीचे. Oh, baby. Okay, so I always take an interview after losing. So what would I like to say about this? I'd say कि I don't know, मेरे को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है about this because it was more like कि yeah, it was the only event I participated in, and we worked really hard, and I actually enjoyed the process of doing it more than this. मैं तो पूरा प्रिपेयर होके बैठी थी कि we are going to lose, and I was like मैं खाना खा लेती हूँ, मेरे को रोना नहीं है, that's it. I was just you know priming my brain कि नहीं फिर से नहीं, कोई बात नहीं. and मेरे को तो इवन रिजल्ट डिक्लेरेशन में जाने का भी मन नहीं था बिकॉज आई वाज लाइक कि क्या ही मतलब है यार, मतलब फिर से हर्ट होगा ज़बरदस्ती. तो आई वाज काइंड ऑफ अवॉइडिंग इट, बट आयुष सेड दैट कि वो रहेगा वहाँ पे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, somebody else is there, I can take it. But yeah. So अभी जो है वो मैं PG जा रही हूँ, and yeah, this was the band. I forgot to show this. And
आई डोंट नो, मेरे को पीजी से निकाल देंगे थोड़े दिनों में मैं अगर इतना ही लेट घुसती रही तो, बट आई डोंट नो, आई कांट हेल्प. सो दैट्स process of it so much. The day we went for shoot and जो editing वाला process था, it was like after so long I felt कि I was in a state of flow for anything. And regarding winning or losing, I think I had lost all hope because आयुष जो था वो बोला कि नहीं होगा, तो I was like okay, I trust him because the amount of times I have thought that कि I have given my best but I've actually lost is disappointing, like very disappointing. And I was in a state कि यार बस कुछ भी हो जाए, I am not hurting myself any further. मैं खाना खाने चली गई थी because I was like I need to suppress whatever the fuck this is. And but मैं जाने भी नहीं वाली थी जब अनाउंस होने वाला था. So आयुष ने बोला कि वो है वहाँ पे. मैं सेड कि ओके, अगर वो है तो फिर we'll manage. So yeah, that was it. बाकी तो ठीक है. It was fun. The shooting was very much fun and the editing process as well. So I'm entering. The time right now is 10:40.